Well, after the three-day review meeting, the Inter-Ministerial Group is likely to submit its report on coal block allocations to the Coal Ministry today. The report will then be forwarded to the Prime Minister's office. But the question is, will the report lead to cancellation of coal block allocations? For 3 days, officials from various private companies met the Inter-Ministerial Group looking into the process of coal blocks allocated to private firms without auction. The Inter-Ministerial Group for Coal Block Allocation will submit its report to the Coal Ministry on Monday after its 3-day review of 29 private sector allottees has concluded. The report would then be forwarded to the Prime Minister's office before September 15. The question is, could the licenses of coal block allocation for several of these private companies be cancelled? The IMG looked at various aspects of coal block allocations, including whether any misrepresentations were made. इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप अभी कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। 15 सितंबर तक वो अपनी रिपोर्ट देगा और किसी व्यक्ति ने, कंपनी ने अगर इस पॉलिसी का मिसयूज किया है, इफ दे हैव फ्रॉडुलेंटली प्रोड्यूस्ड डॉक्यूमेंट्स टू एक्वायर अ कोल ब्लॉक, देन दैट कंपनी, दैट इंडिविजुअल, द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स एंड वी विल टेक द स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन इफ समबडी हैज मिसयूज्ड द पॉलिसी. But the opposition remains unrelenting in its attack on the government on the alleged violations in coal block allocations. हंसराज अहीर और मैंने इसका लगातार 2 साल से फॉलोअप किया और इसके कारण हमने जो सीवीसी को चिट्ठी लिखी थी, कंप्लेंट की थी, उसको विचार करके उसकी गंभीरता को समझते हुए सीवीसी ने सीबीआई का ऑर्डर दिया है, सीबीआई जांच का जो चल रही है. यानी ये सरकार ने सीबीआई जांच नहीं लगाई, हमारे कारण हुई है. The real test will be if the IMG recommends tough action against cancellations, will the government bite the bullet? With Pooja Shelley in New Delhi, Shobhit Mittal for Times Now.